New Delhi is infamously known by many as India's rape capital, with one woman being raped every 20 minutes. Most women say they routinely face harassment, particularly on public transport. But one group of women is trying to get around the problem with a taxi service for women by women. As Bismillah Geelani reports, it's a small step, but one which could have a significant impact. 21-year-old Chandni stands out in her blue uniform. At a car parking lot in New Delhi, she's getting her taxi ready to pick up her first customer of the day. Chandni is one of just a handful of female taxi drivers. उस चीज़ को तोड़ने के लिए, उसको ब्रेक करने के लिए जब मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली तो मैंने इसको एंड आई एम सो हैप्पी कि मैं ये काम कर रही हूँ जो कि मतलब कभी किसी ज़माने में कहते थे कि ये इम्पॉसिबल है कि एक लड़की कमर्शियल ड्राइवर के रूप में काम नहीं कर सकती है, तो उस चीज़ को हमने तोड़ के दिखाया है। वो जो सीमा हमारे आगे बंधी हुई थी उसको हमने ब्रेक किया। The sign on her car reads, "Cabs for women by women." It's run by a small non-profit NGO, Sakka Consulting Wings, and supported by the Azad Foundation. We just thought this is one way to help women reclaim public spaces for themselves. New Delhi is known to be among the most unsafe cities for women. The brutal gang rape of a young woman in December last year provoked national outrage and a widespread demand to ensure women's safety. It's also created a greater demand for the women's only taxi service. Almost 40, I would say about 35 to 40% more calls per day, easily. So a lot of people actually called us to verify if the service exists. And what was very interesting to note that there was a huge number of calls from across the world of people calling up and asking how can we help. And so they wanted to know how they can help us to actually grow the service. Drivers like Chandni feel a great sense of pride being a female taxi driver, but they also face many challenges, the biggest of which is the way they're treated by their male counterparts. अगर किसी की नज़र पड़े कि भाई महिला ड्राइवर है तो मतलब वो तो रिएक्ट करते हैं, हॉर्न बजाते हैं, ओवरटेकिंग और इस टाइप का बहुत रोज़ होता है हमारे साथ। अगर अपनी गाड़ी में रेस्ट कर रहे हैं तो ऐसे मतलब बारी बारी से लोग देखने आते हैं जैसे अजूबा कोई गाड़ी में बैठा हो, हम मतलब रेस्ट नहीं कर पाते ठीक से, तो इस तरीके से का हमें प्रॉब्लम आया। Another driver, Rita, says it makes driving dangerous. आज सुबह की बात है, मॉर्निंग में ही मैं 6:45 जा रही थी गाजियाबाद ड्यूटी। तो सराय काले खा के आगे राइट टर्न करते ही मैंने एक टैक्सी वाले से मतलब ओवरटेक करने के लिए जगह मांगी, उसने मुझे दे दिया तो मैं निकल गई और फिर मैं बीच की साइड में आगे मैंने कि जो भी जाएगा जाने दो। और आगे रेड लाइट थी, उसका ये रवैया था, उसने कुछ नहीं देखा, आगे मुझे देखता रहा, मुस्कुराता रहा। मैं उससे मतलब हाथ से इशारा करके बोल रही कि रेड लाइट हो गई है, और पीछे से उसने इंडिका में जोर से मारा और वहाँ के 2-3 आदमी उतरे, खूब पिटाई करी उसकी, और फिर पीछे से ट्रैफिक जाम लग गया। All 10 of the current female drivers at the cab service are put through a vigorous training course, and many more trainees are signing up. Here they learn more than just driving skills. Their lessons also touch on gender issues, communication skills and self-defense techniques. Rita was married off to a neighbour when she was just 13, but she has challenged the marriage and is now independent. She doesn't want to think about getting married again. लोगों मतलब शादी हो गई, लोगों को पता ये वो, पर वो मेरी मर्जी से नहीं हुई थी। 13 साल में कोई नहीं जानता, छोटे बचपन में 5 साल में कुछ और होता, 10 साल में कुछ और सीखते हैं, 15 साल में कुछ और सीखते हैं। क्योंकि अपनी लाइफ अपनी मर्जी से जियो, जरूरी नहीं है हम दूसरों के हवाले कर दें। The whole training is a life-changing experience, including for the trainers like Rakesh Kumar. The women's only cab service is planning to expand its services and is holding consultations with the government to create opportunities for women in all types of public transport in Delhi. They argue that this will make the city safer for women. Drivers like Chandni are eagerly waiting for the opportunity to work as bus drivers and turn Delhi into a safe capital for women.
From New Delhi, this report was produced by Bismillah Geelani for Asia Calling.